Today we are going to study the third one. It's clear to everybody. We will keep all the waves in the same pattern. First of all, we will study the historical events or the social and political situations which led to or which led to that protest or that sort of struggle from the female parts. And after that, what they achieved as a result of their struggle. We'll also be studying about the major activists of that particular time. Let us start. We have the third wave feminism. First of all, we'll go to the historical content. From the historical content, we will come to know why it actually started. What are the reasons of that? Women seem to be more equal to men. At that time, the females, and they were almost similar to men in their social and political rights actually. Women are no longer obligated to marry or have children, and marriage is more equal. They were not like इनको कानूनी तौर पर इस चीज़ पे कोई push नहीं कर सकता था that they should go for marriage and have children, but it was optional for them. They can even live a life without marriage. The legal system is better at protecting women's rights. The system was also better. Then why we had to go for the third wave of feminism? What were the actual events? We'll see that. Here we go to the next slide. Third wave feminism seeks to challenge or avoid what it seems the second wave's essentialist definitions of femininity. In the third wave actually हुआ क्या कि जो second wave के अंदर जो definitions थी, जो बुनियादी अज्जा थे दूसरी वेव के, उनको चैलेंज किया गया. मज़ीद कि जो ख़वातीन को एक शेप दी गई है, उनका एक जो पॉलिटिकल एंड सोशल नुक्ता नज़र सेकेंड वेव में डिफाइन किया गया है, वो ठीक नहीं है. इन अदर वर्ड्स, उन्होंने एक सेल्फ करेक्शन के लिए वर्किंग शुरू कर दी, which often assumed a universal female identity and overemphasized the experience of upper middle class white women, जिसमें उन्होंने इलाकाई geographical and social and political plus family differences को overlook किया और set patterns बना दी कि if there is a female or there is a lady, she has the same sort of features irrespective of her political, social, religious or geographical background. And on the other side, the another factor that was very prominent in the second wave of feminism about that, the point of view projected in the second wave were of a particular nature related to the middle class white women only, not the women from the lower class, not the females from the working class, from the employed class actually. So these were actually the shortcomings. ये वो मसले मसाइल थे second wave के अंदर जिसको कवर करने के लिए थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म शुरू हुई या लोगों ने तीसरी दफ़ा स्ट्रगल की. Is clear up to here? Third wave feminists such as Ali Green often focus on the micropolitics, not macro level, micro level, छोटे level पे बेटा, where the females are subjugated to different sort of cruelties or different sort of ill practices, and challenge the second wave's paradigm as to what is or is not good for women. And they try to challenge themselves what they actually achieved in this second wave of feminism. जिसमें ख़वातीन को बेटा डिफाइन किया गया था कि फेमिनिज्म से एक्चुअली मुराद क्या है, किस किस्म की जो फीचर्स है वो ख़वातीन की होनी चाहिए. अगर इफ समबॉडी इज़ अ फीमेल, ही should behave like this, she should treat like this, or she should deal her matters in this way. लेकिन इसमें उसको चैलेंज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए. There should not be a pet definition for females. They should be open, like to define themselves by their own work, by their own struggles. Not that we have set values and set norms and set standards कि अगर कोई लड़की है तो वो मोटरसाइकिल नहीं चला सकती, ऐसा नहीं होना चाहिए. It should be open for them. If they wish, they can do so, no problem. If they are able to do so, they should do so. It's clear? तो बेटा ये जो सेट पैटर्न था सेकेंड वेव में, उसको ब्रेक करने के लिए, टू गिव देम फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम टू make their selections by themselves,
they actually started struggling, and that phase is called third wave of feminism. It's clear to everybody? Okay, here we go. Third wave feminism was a continuation and response to the perceived failure of the second wave. दूसरा बेटा जो तीसरा बल्कि point of view कि why third wave actually started. Some of the people thought that actually in the second wave what they targeted was not achieved. जिसकी उन्होंने कोशिश की वो अचीव नहीं हुआ. That's why they started third wave. They started their struggle again. It's clear. The movement that called as a young feminist emphasizing collective action to effect changes and embrace the diversity represented by various feminism. Actually, in this wave, इसमें क्या हुआ कि नौजवान जो लड़कियां थी उन्होंने एक मजमूई अमल की तरफ जोर दिया to effect changes and embrace the diversity represented by various feminists. कि उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि भाई हम एक ही ब्रश से सारी खवातीन को पेंट नहीं कर सकते. दैट मीन्स हम एक ही अकदार और वैल्यू से हर एक को ट्रीट नहीं कर सकते. हमें उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल लेवल, इकोनॉमिकल पोजीशन एंड सोशल स्टेटस, इन सब चीज़ों को ज़ेरे गौर लाना पड़ेगा. And only after that we can define what is right or what is not right for a particular lady or for a particular female. It's clear to everybody? So beta, this is the fourth point actually. Taking their background into consideration. I'm sorry. They focus on a multicultural emphasis. उन्होंने कहा कि सकाफत को जो कल्चर है इसको कंसीडर करना चाहिए. सारी खवातीन एक ही कल्चर से नहीं है. एंड स्ट्राइव टू एड्रेस प्रॉब्लम्स स्टेमिंग फ्रॉम सेक्सिज्म, रेसिज्म, सोशल क्लास इनइक्वालिटी एंड होमोफोबिया. और उन्होंने इन सारे मसले मसाइल को कि ये जो सारी चीज़ें हैं दे आर एक्चुअली माइनर लेवल इश्यूज. तो अगर हम बड़े लेवल पे ही बात करते रहेंगे तो इनको कौन डील करेगा? वी नीड टू डील दैम वन बाय वन इंडिविजुअली. और इनको हल करने के लिए हमें जो ख़वातीन है उनके बैकग्राउंड और उनकी जो पूरी हिस्ट्री उसका पता होना चाहिए. सो वी कैन नॉट हैव स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस एंड वी नीड टू फॉलो दैट. चाहे कोई भी हो जाए, एक ही जो है ना वो हाथ से हम उसके साथ डील करें. नो, वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द माइक्रो लेवल फीचर्स ऑफ द सिचुएशन ऑफ फीमेल्स. इज क्लियर बेटा? देखिए, पहली और दूसरी वेव में जो मेजर अचीवमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस थे वो हल किए गए. तीसरी वेव में वो छोटे लेवल्स पे भी गए. इसलिए दिस इज स्टेप बाय स्टेप एक्शन. जैसे ऐसे ही कोई बंदा फौत हो रहा हो, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो ऐसे सिचुएशन में किसी को ना डाले, तो सबसे पहले बेटा हम उसको, यानी अगर उसके दिल की धड़कन बंद हो रही तो पहले उसको ठीक करेंगे, बाद में उसकी उंगली से निकलते हुए खून को भी रोकेंगे. इसलिए वी गो स्टेप बाय स्टेप. सबसे बड़े पहले, फिर उसके बाद उससे छोटे, फिर उससे बड़े. इन द थर्ड वेव एक्चुअली दे वेंट टू द माइक्रो लेवल. इट्स क्लियर? ये इसकी की वर्डिंग है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट events are points. In 1994, the Gender Equity in Education Act became law in the US. It banned sex role stereotyping and gender discrimination in the classrooms. इससे क्या हुआ? एक कानून पास हुआ. क्लासरूम के अंदर बेटा जो एक किस्म का ख़वातीन के साथ नारवा सलूक किया जाता था या एक अलहदा उनके साथ सलूक किया जाता था, उससे मना किया. In 1994, the Violence Against Women Act became law in the US. अमेरिका के अंदर ये ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ कानून बन गया, या लॉ जो था वो पास हो गया. In 1995, the Fourth World Conference on Women was held in China. चाइना में जो है वो चौथी दुनिया की जो कॉन्फ्रेंस है या आलमी कॉन्फ्रेंस ख़वातीन के ऊपर वो मुनक़्क़द हुई. 2007, the Gender Equity Duty of the Equity Act ये पास हुआ. 2006 एक्ट के 2006 came into effect in the United Kingdom. यूके के अंदर, बरतानिया के अंदर 2006 में पास होने वाला जो कानून था वो नाफज हो गया. 2008, Norway requires all companies to have at least 40% women in their boards. 2008 में नॉर्वे ने सारी कंपनीज को कह दिया कि 40% जो एम्प्लॉयज है वो ख़वातीन होनी चाहिए. इसके लिए बेटा